वो लाइट्स ऑफ करो, ये क्लियर नहीं दिख रहा, पीछे वाली 3 लाइट्स। बंद करना वो लाइट। ये भी कर दो, पीछे वाली ऑन कर लो ना, ये बंद कर दो लाइट। कर दे सारी, बंद रहने दे, बंद रहने दे, बंद रहने दे। ओके जी, प्लीज प्लीज। Okay ji, our today's lecture is on modifiers. What we have done in our last lecture? So far? Okay. Everyone has installed 3ds Max? Anyone without installation? Yes? First class है। बड़ी मेहरबानी आप आ गए। फर्स्ट क्लास है जिनकी, वो भी प्लीज़ आज कर लेना, डाउनलोड इंस्टॉल जो भी करना है कर लेना। ओके, राइट। So our today's lecture is on modifiers. Previously, in previous lecture, we have done simple standard primitives and extended primitives. And with the help of extended primitives, you guys have created a 3-seated sofa also, right? So modify, what are the modifiers? Modifiers, when you want to modify a pre-built 3D shape or pre-built 3D model to next level, then we add some elasticity, that is segments in that, and then we apply further modifiers to change the shape for next level, right? That is for that change we need a modifiers, right? Any modifier we can apply to any object. ऐसा कुछ नहीं है कि एक मॉडिफायर एक पर ही लगना है। एनी मॉडिफायर यू कैन अप्लाई टू एनी ऑब्जेक्ट, बट मैं उस ऑब्जेक्ट पर लगा के दिखाऊंगी जिस पर उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा, राइट? एंड द ओके, एंड यू कैन अप्लाई नंबर ऑफ मॉडिफायर्स टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑल्सो। मतलब एक ऑब्जेक्ट पर आप कितने सारे मॉडिफायर्स लगा सकते हो। यू कैन अप्लाई मोर देन 1 मॉडिफायर्स टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑल्सो, राइट? So first we'll take a plane, Alt W. This is a plane. Modify, increase segments. For this, press F4. Suppose 30-30. Now here is your modify list. Click here. Press A. First modifier is affect region. Please affect region. Please note down the modifiers because here is number of hundreds of modifiers, but we are not going to do all these modifiers. So please note down modifiers. First is affect region. Click here. See, here is fall off. How much fall off you want? Curve. Bubble. Right? This is your affect region modifier. If you want to temporarily hide the effect of modifiers, then click here, this eye icon. Just click here. It temporarily remove the effects of your modifier. Again, if you want, then again click here, right? This is temporarily removing the effects of modifiers. If you permanently want to delete, then simply delete here. Here is a delete button, delete here, your modifier will be deleted. Control Z. If you want to make any changes in plane after applying any modifier, then you just click on plane.
तो यहाँ पर आप अपने चेंजेस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मॉडिफायर लगा दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते. अगेन क्लिक ऑन मॉडिफायर्स, राइट. This is a fully parametric software, so you can change the parameters at any stage. For now, delete. Modify list. Next modifier is bend, bend modifier. Bend modifier. This is to bend any object. This is a cylinder. Here is angle. To which angle you want to bend? Suppose I want to bend it in 180 degree. सिलेंडर थोड़ा सा पतला करते हैं, रेडियस. अगेन बेंड. डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, किधर को बेंड करना है, 0 ही रहने देते हैं. नाउ सी द हाइट सेगमेंट्स. आई हैव 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स इन हाइट ऑन सिलेंडर. तो वो एग्जैक्ट वहीं से ही बेंड हुआ है जहाँ पे वो हाइट के सेगमेंट दिख रहे हैं, राइट. If you want to give it a smooth shape, then you have to increase your height segment. Go to cylinder, height segments. जितना भी स्मूथ करना है, मिनिमम करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा. Give more. Yes, segment is actually elasticity of the object, right? But उतने ही देना जितने रिक्वायर्ड हैं. ओनली यूज सेगमेंट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट until otherwise it increase your file size and increase your render time also. तो उतने ही रखना. Clear? Again come to bend. Now axis, on which axis you want to bend. This is x axis, कुछ इस तरह से दिखेगा. Y axis कुछ ऐसे दिखता है. Z axis something like this. Right. Now this is limits, effect limits. Sometimes I don't want to apply bend modify to the whole object. Just I want to apply just on some part of the object. Then we use limit effect. Click on limit. Now there is upper and lower limit. कोई भी ले लो limit. Upper limit. Can you see this orange frame? This orange frame. This is actually bend frame, modifier frame, or you can say it a gizmo, right. This is actually a frame, and limit is a numerical value to set your frame, right. Now if you want to graphically manually move your gizmo, click here. This is small icon. Click here. Here is your gizmo. Click on gizmo. Now move your फ्रेम. तो वो जैसे जैसे फ्रेम में जो जो आता रहेगा वैसे वैसे वो करता रहेगा, इफेक्ट बेंड होता रहेगा, राइट. दैट इज द अदर वे टू सेट योर बेंड. क्लियर है? डिलीट. नेक्स्ट मॉडिफायर इज योर FFD. We have 5 type of FFD. FFD 2x2, 3x3, 4x4, FFD box and FFD cylinder, right. The purpose of all 5 are same, the end result of all 5 are same. Just the difference is control points. If you see FFD 2x2, 2x2 is length, width, height. Control points in length, width, height are 2 is fixed. Only 2 points will be available for length, only 2 points will be available for height, only 2 points will be available for width, right. इससे आप ज़्यादा increase, you cannot increase or decrease this control points in FFD 2x2. Similarly for 3x3, 4x4.
इसमें आपको 3 कंट्रोल पॉइंट मिलते हैं, इसमें आपको 4 कंट्रोल पॉइंट्स मिलते हैं. You cannot increase or decrease these control points, right? If your object is under this category, I mean you just control a few control points, then you can take this 2 into 2, 3 into 3 or 4 into 4. But if you required more control points, and then we have two more options. One is FFD box and FFD cylinder. Right? If your object is some of in between box shape, then go for box option, and if your object is some of spherical or cylindrical shape, then go for FFD cylinder. Right? Now I have cylinder shape, then I'll go for cylinder. Cylinder. Can you see these orange points, orange dots? These are actually your control points, right? And see, here is, this is control point 4 into 6 into 4. Clear नहीं दिख रहा होगा. 4 into 6 into 4. This is your actual, that is 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4. But here we can control it. We can increase or decrease it. Just simply click over here. This is. अब साइड पे नहीं चाहिए मुझे, हाइट पे इंक्रीज कर लेते हैं. 10. Okay, see, in height wise my control points are added. इसको थोड़ा रेडियस बढ़ा दो. Right? Now how to select your, see यहाँ पे select नहीं होता है control point. How to select your control point? Click here on small arrow. Here is your control points. Click here. Now select your control points and move whatever shape you want to create. We use this for creating pillows, cushion, bed sheet, to make corners out, to pull out the corners, whatever is. Right? This is some of FFD box or FFD cylinder. Delete. Next modifier is lattice. Modify list, lattice. Lattice is a wireframe, solid wireframe. Otherwise क्या होता है, if we click over here F3 and shift Q, क्या इसका शॉर्टकट तो यही होता था रेंडर का. आपका you cannot render in a wireframe. Wireframe में आप कभी भी render नहीं कर सकते हो, right? It is just a 2D type wireframe. For this, if you want to make it convert it into a solid form, solid cage type or solid wireframe, then we use लगा दिए modify list, press L. This is lattice. Click here. Now apply to entire object. Yes, we have two options, joints only और स्ट्रड्स ओनली. जॉइंट्स जो ये मोटे मोटे से आपको दिख रहे हैं, और स्ट्रड्स उसकी लाइंस. क्या चाहिए आपको, पहले जॉइंट्स कर लेते हैं. जॉइंट्स, एंड द पैरामीटर फॉर जॉइंट्स इज दिस. कैसा जॉइंट चाहिए, टेट्रा, ऑक्टा और ऐसो का. रेडियस, reduce the radius of your joints. Suppose this is the radius of my joint. This is segment. If you increase your segment, it will convert into a round sphere, geosphere form, right? अगर उसको थोड़ा डायमंड सा देना है तो फिर उसको रिड्यूस कर दो, राइट? स्ट्रड्स ओनली, सिर्फ स्ट्रड्स देनी है. दिस इज योर स्ट्रड्स. रिड्यूस द रेडियस फॉर इट ऑल्सो. सेम फॉर योर सेगमेंट. ये इस तरह से सेगमेंट आएंगे, साइड के सेगमेंट इस तरह. इफ यू वांट टू मेक इट राउंड, बट वी डोंट वांट टू मेक इट राउंड.
right? Both, if we required both, then click here. Studs भी आ गए और ये आपके spheres भी आ गए, joints भी आ गए, right? If you want to increase or decrease the density, इसकी density आपको बढ़ानी है या कम करनी है, then here is no parameter for that. For this you have to go back to your sphere and increase or decrease your segment as per your need. If you want to make it more dense, then segment 40, more dense. If you want to make it more light, reduce the segments by 20, right? It's clear? Lattice. And next is your noise. Noise we generally use for natural looking stones. Modifier list and noise. Before changing over here noise value, first change in strength. Strength X, Y, Z. कोई भी रफ सी strength दे दो. Now change here. This is different shapes. Whatever shape you want, you just keep it and apply your natural stone material. It will convert into a stone, right? Next is your relax. अब यहाँ पे आपको मैं दो पैरामीटर लगा के दिखाती हूँ, दो मॉडिफायर, सॉरी. टेक अ बॉक्स. Suppose this is my simple box. I want to create it a oatmeal. एक stool type जो होता है, पूरा upholstered होता है, oatmeal. Increase its segments. 20, 20, 15, right? Now go to modify, press R, relax, click here, relax value full. Now irrigation, softness, to give it softness. This is okay for me, this softness is okay for me, right? Now अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, पुल अप करना है ताकि हो और थोड़ी सी सॉफ्टनेस लगे. नाउ अगेन गो टू मॉडिफाई लिस्ट, प्रेस F, FFD box. We'll take FFD box. Now if you want to increase control point, okay, मेरे लिए ठीक है ये. Control points, top, select middle 4 points, go to front or left, press Alt key and unselect lower कंट्रोल पॉइंट्स, क्योंकि ऊपर से सिलेक्ट किए तो वो नीचे वाले भी कंट्रोल पॉइंट मेरे सिलेक्ट हो गए बाय डिफॉल्ट. उसको अनसिलेक्ट करने के लिए मैंने ऐसे किया है. नाउ पर्सपेक्टिव एंड पुल योर दीज पॉइंट्स, राइट? ठीक है जी. एक पे आप जितने मर्जी मॉडिफायर लगा सकते हो. इट इज ओके नाउ. FFD रिलैक्स लग गया. नाउ अगेन गो टू मॉडिफाई लिस्ट, प्रेस FFD बॉक्स, गो टू कंट्रोल पॉइंट्स. आप चाहे ऐसे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट दिस, प्रेसिंग कंट्रोल की, सिलेक्ट दिस, दिस. ऐसे करोगे तो एक बार में सिलेक्ट होगा, नीचे वाले नहीं सिलेक्ट हुए. बट फॉर अगर आपको फास्ट थोड़ा करना है, टॉप पे गए, ऐसे क्रॉसिंग विंडो बना के सिलेक्टेड ऑल 4, पर इसके नीचे भी जो 2-4 है वो भी सिलेक्ट हो गए हैं, राइट? फॉर दिस गो टू फ्रंट, प्रेस ऑल्ट की एंड क्रॉसिंग विंडो, अनसिलेक्ट कर दो इनको, तो वो सारे अनसिलेक्ट हो गए. पर्सपेक्टिव अब सिर्फ ऊपर वाले ही हैं. नाउ पुल इट. क्लियर? अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो ऐसे ही क्लिक करके कर लो. और ये तो 4 पॉइंट है, अगर ज़्यादा हो तो फिर तो ये आना चाहिए आपको.
modify list. A स्फीरिफाई, स्फीरिफाई कुछ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको राउंड कर देगा, स्फीयर बना देगा, नथिंग एल्स. Skew, skew is a again a bend, again a bend but a taper bend. टेपर, वो तो ऐसे करके बेंड होता था ना, ये ऐसे ही झुक जाता है, जस्ट लाइक दिस. अमाउंट, स्ट्रेच एंड टेपर, स्ट्रेच एंड टेपर का सेम डायरेक्शन किधर देनी है, सेम योर एक्सिस, एक्स वाई एंड z, same for your limits. Squeeze, amount, we can create a pencil from here also. This is curve, कितना कर्व लेना है, रेडियल ऊपर वाला कितना चाहिए आपको, रेडियल का कर्व, right? You can create this, you can create this shed also, you can create apply this lattice also. अब इस पे lattice लगा दो, right? It's a combination of two. Taper, sorry, stretch, stretch, nothing, just stretch, बस stretch करता है ये, खींच दिया उसको, और ये वाला, that's it. Next is taper, taper, amount, and this is curve, right? This is taper. Last, twist, twist, angle. Now see, till now we have, when whatever modifier we have applied, we have to increase the segments. हमने segments increase किए हैं, right? But for in twist we have to reduce the segment. तभी वो twist वाला effect दिखेगा. Reduce to 5. Now give twist to create a decorative candles. Right? Rest is same. Right? These were your modifiers for today, till now, starting modifiers. Two modifiers are left, that is are your animated modifiers. अब वो ध्यान से देखो. Ten feet by 10 feet, add segments. Now please see carefully, go to modify list, press ripple R, this is ripple, click. Now we have two amplitudes, amplitudes are heights. One amplitude is from one corner and other is from second corner.
गिव सम हाइट, ऐसे टाइप कर देते हैं 5 5 एम्पलीट्यूड हाइट. नाउ वेव लेंथ, वेव इज दिस वेव. अब वेव लेंथ जितनी इंक्रीज करोगे वो निकल ही जाएगी उसमें से. सो हाँ, इसको थोड़ा छोटा करो वेव लेंथ को. राइट. नाउ हाउ टू एनिमेट इट. फर्स्ट on your control key, this is your sorry or auto key, this is your auto key on, ये रेड कलर का हो गया. now scroll your animation bar, this is your animation bar, scroll your animation bar to its end frame, this is your animation frames 1 to 100, तो यहाँ तक लेके आना है 100 तक, उसको ड्रैग करके. now give some value in face, here is face value, ऐसे ड्रैग करके कोई सी भी वैल्यू दे दो. इट विल कन्वर्ट टू अ रेड आइकन. ये रेड दिख रहा है आइकन हो गया. इट मीन्स योर एनिमेशन इज जनरेटेड. नाउ ऑटो की ऑफ, गो बैक, नाउ प्ले. राइट. if you want to delete the animation, see these two keys are generated, one this key is dark black और एक वो starting वाली key generate होगी है मेरी. right. if you want to delete it, simply crossing, make a crossing window, select all and delete. now my animation is deleted. see कोई animation नहीं है. right. remove this. now एक बार दोबारा देखो. for next modifier, modifier list, wave, WAVE, wave. It is quite similar to this. wave modifier, same amplitude, 5 दे देते हैं. इसमें कुछ ये शटर जैसे बनते हैं. सेम वेव लेंथ, ज़्यादा करोगे तो वो निकल जाएगी. reduce it, this is your waves. now again auto key on, drag your animation bar to end, last frame. now give some value in face, auto key off, bring it to back and play. right. key, select and delete if you don't want any animation. Clear है जी. This is all for your today's lecture. जितने भी modifiers थे, this is all. Now your CA1 is अभी pending है ना अभी. CA1 you have to download any 10 objects, any small 10 objects, chair, table, कोई lamp, कुछ भी small 10 objects. you have to create any 10 objects from any downloaded images with the help of standard extended primitives and modifiers only. Please don't use any edit, poly and फलाना ढमकना. कुछ और नहीं यूज़ करोगे because checking parameter is only on your standard extended primitives plus modifiers. I'll show few of examples also. Some of student work ही दिखाती हूँ मैं. I am recording this lecture for your first half class, तो ये आपको भी दे दूँगी. See like this. You have to create any small. और ये चद्दर वदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. Small objects which you can create with the help of modifiers. ये ट्विस्ट लगाया हुआ है. राइट. लाइक दिस. इस तरह से आपको 10 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं. दिस इज योर CA1. बिफोर नेक्स्ट क्लास एवरीवन मेल मी CA1.
and your subject matter, please mention your name and section only. अपना section जरूर लिखना है और अपना नाम, रोल नंबर मैं ढूंढ लूंगी खुद ही. No registration number please, only your name and your section number, right? Yes, screen share. Please don't send me files, screenshots. Okay, thank you.